Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथिरे मु ऑलरेडी प्लस टू सेकेंड इयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एवं मु प्लस थ्री CBCS फिजिक्स ऑनर्स जीई और MSc फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस अपलोड करुच्ची जदि भल लगिला ताले वीडियोस को लाइक कर देबा और चैनल को सब्सक्राइब कर देबो यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स आल्सो इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पई बेल आइकन को एठी ऑल रे सेट कर देबो तापर वीडियोज रो क्लैरिटी बढ़ावा पई गो टू सेटिंग्स क्वालिटी एडवांस उपरे क्लिक करी यू कैन इंक्रीज द रिजोल्यूशन सबू वीडियोज पाई पीडीएफ नोट्स मु पठेबी जोटा एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करी यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तापरे मोर चैनल नेम को क्लिक कले सबू वीडियोज को मु यूनिट वाइज एच पार सिलेबस सजाई की रखिथिबी व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम द प्लेलिस्ट एठी सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज रो टॉपिक रे हमें रिकैपिचुलेशन ऑफ वेक्टर्स जोटा कि वेक्टर एल्जेब्रा बा वेक्टर कैलकुलस अंडर आछी यार इंट्रोडक्शन पार्टा आमे पढिबा सो ऑलरेडी तमे एटा प्लस 2 रे पढिचो तार गोटे बेसिक रिव्यू आमे देखिबा वेक्टर्स रो तो वेक्टर कहिले आमे कोन बुझिबा इट इज अ क्वांटिटी व्हिच नीड्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर इट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन okay and in addition the quantity should obey the vector laws of addition and multiplication so किछिटा एग्जांपल जदि हमें वेक्टर देखिबा लाइक योर डिस्प्लेसमेंट आसीगला velocity acceleration force linear momentum then we have the weight angular momentum magnetic field electric field etc so vector eta hela acha scalar mane kono it is a quantity which has only magnitude but no direction okay so kichita example hela like mass time distance ba length koi paro then speed temperature work power energy volume etc okay now coming to the representation of a vector so vector ko ame represent kari pariba graphically by a straight line as you can see in the figure from suppose O to P okay let it be a vector A जार उपरे हमें एरो मार्क देला ओके अच्छा ए स्ट्रेट लाइन रो सुइटेबल लेंथ रहिबो according to a chosen scale and we put as I said an arrow mark at the end which represents the direction of the given vector okay the end point is P the starting point is O so the length will give you the magnitude of the vector okay our arrow mark ta direction ko suchaibo now the initial point of the vector as you can see in the figure which is O is called suppose here origin or the tail while the final point here P is called the head or terminus or terminal point of the vector right vector को हमें represent करि परिबा by placing an arrow on the corresponding letter suppose vector को हमें represent करला by letter A ता ऊपर arrow mark हमें दे देबा okay आ यार magnitude को हमें कहि परिबा modulus of the vector which is represented like this mod of A or simply A okay so केते प्रकार केते टाइप रो वेक्टर अछि अब देखिबा इक्वल वेक्टर नारु जणा पड़छि they will have a same magnitude and direction okay so magnitude समान हेगला and they point in the same direction negative vector माने एथिरे कोन हबो magnitude जदियो समान रहबो but direction टा opposite रहबो okay a equal to minus b हबो accordingly figure ए भले आसीबो right then we have a null or zero vector okay zero vector mane it will have zero magnitude and any arbitrary direction okay then collinear vector that means these are the vectors having same line of action okay so या अंडर रे आसी जिवो तमरो parallel vectors so ना रो एठी जणा पड़छि दुइटा वेक्टर parallel केते बेले हबो if they point along the same direction so magnitude एठी not necessarily magnitude समान हे भी पारे न भी हे पारे right then we have another type of parallel vectors like दुईटा vector actually एटा टिके printing mistake अछि एठी anti parallel हबो okay I highlight it this should be anti parallel vector जदि हमें कहिबा ताले opposite direction रे समानकर pointing टा हबो okay that means एठी जदि a vector a direction रे आछि b vector टा उल्टा direction रे आसीबो okay opposite direction रे a magnitude again may not be equal to each other okay so ए दुई केस रे हमें ए भलिया वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर्स
कहि परिबा तापरे आछि को प्लानर वेक्टर्स माने जदि गुडाए वेक्टर्स multiple vectors they lie on a single one plane then they are said to be coplanar as you can see in the figure okay direction जोआडे भी हो किंतु गोटे प्लेन रे से माने रहिबा कथा then the next one is the orthogonal vectors that means the vectors will be perpendicular to each other right now the next one is unit vectors এটা তুমি already plus 2 রে পড়িছো unit vector কইলা আমি বুঝিবা the vector having magnitude equal to 1 okay unit magnitude यार रहिबो and some sense of direction okay so एई भलिया वेक्टर हमें केते बेले पाइबा जदि गोटे वेक्टर नि गला धरो a तार मैग्नीट्यूड आसी गला mod a एबे ए दुइटा को डिवाइड जदि करिबा हमें यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करिबा a cap okay or a hat right which is equal to vector a by its magnitude okay so unit vector amaro jo respective coordinate axis अछि rectangular coordinate axis x y और z axis ताई सीधा रे रिप्रेजेंटेशन आमे जानिचु i cap j cap आउ k cap okay तापरे आछि like vectors means these are the vectors with the same direction okay समान डायरेक्शन जदि माने सूचौथबे राइट तापरे आछि polar vector माने कोन these are the vectors having a fixed origin and have linear direction effect which are called polar vectors okay or position vectors linear velocity linear momentum acceleration force etc eta hochi kichita example okay acha तापर शेषरे आछि axial vectors कहले they are directed along the axis of rotation okay example like your angular velocity angular momentum torque etc okay एबे नेक्स्ट बढ़िबा को एडिशन ऑफ वेक्टर्स केमती हुए देखो दुईटा वेक्टर जदि आमे नेगला a आउ b ताले तार रिजल्टेंट को आमे जदि कहूचु r देन आइदर दुईटा फॉर्म में आमे याको ऐड करि परिबा गोटे हला ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आ गोटे हला पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो ट्रायंगल लॉ कोन कहूची एई दुई वेक्टर को आमे ए भलिया रिप्रेजेंट करिबा जेमति कि सपोज वेक्टर a यार जो हेड अछि ओके हेड माने जो एरो मार्क एटा जो जगह रे सरुची ठीक सेही जगह रो हम स्टार्ट करियो वेक्टर b रो टेल टा आ ऊपर को बढ़ेबा ओके ताले रिजल्टेंट हमें केमती पाइबा वेक्टर a रो टेल आ वेक्टर b रो हेड को जदी जॉइन करूछु ओके राइट सो वी कैन राइट a plus b equal to r ओके एटा हला ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तापरे आछि पैरेललोग्राम माने जानिचो एटा होछि सामांतरिक चित्र so if the two adjacent sides of the parallelogram okay दुईटा adjacent sides आमे नै जबा गोटे को नेबा हमें a आरो गोटे को नेबा हमें b so they are represented along the two adjacent sides of a parallelogram then resultant हमें पाइबा केमथि ए वेक्टर सम a और b रो resultant ता a मझिरो आसीबो okay along the diagonal okay so ए केस रे भी a plus b will be equal to r हबो r रो मैग्नीट्यूड आमे यदि बाहर करिया चाहिबा ताले it will be square root of a square plus b square plus 2ab cos theta now what is theta it is the angle okay the angle between a and b now resultant our vector a भितर यदि एंगल हला बीटा okay this one then tan beta equal to b sin theta by a plus b cos theta or beta equal to tan inverse of this much okay so this is the value of beta as I said beta is the angle between r and a तो एटा हला ट्रायंगल लॉ बा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एबे देखिबा सबट्रैक्शन ओके दुईटा वेक्टर को हमें केमती बिजोग करिबा सो सिंपल जिंस सबट्रैक्शन कहले माने हमें बुझिबा it is same as addition of a vector a with another vector suppose minus b okay so a minus b is equal to a plus minus b okay so same way रे हमें by applying the law of vector addition से triangle law ही पारे बा parallelogram law ही पारे हमें subtraction भी करी पारिबा right अच्छा now coming to the properties of vector addition कोन कोन properties अछि प्रथम property हला it will obey the commutative law माने a plus b equal to b plus a हबो second one
it will obey the associative law. A plus within bracket b plus c will be equal to a plus b bracket re plus c, or it is equal to a plus b plus c. ओके तापर आसची पॉलीगन लॉ. ओके पॉलीगन लॉ बा बहुभुज आमे नहीं जावा पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन जो थे कि आमे गुड़ाए वेक्टर सपोज नहीं गला ए बी सी डी एम ए भाया आमर चार्टा वेक्टर अच्छी. सो सेम वे रे आमे गोटे रो हेड को आ गोटे रो टेल रे जॉइन करी करी जीवा. ओके एंड फाइनली लास्ट जो वेक्टर रहिबो तार हेड को फर्स्ट रो टेल रे जदी जॉइन कर देला देन वी विल गेट द रिजल्टेंट which is a plus b plus c plus d, right? Acha, then the rectangular components of a vector तो 3 dimension रे आमे याको आगे देखू. सपोज गोटे वेक्टर नौ आमे a. okay this is a which is obtained by joining from o to p. Now this vector a is making some angle, suppose alpha beta or gamma. okay with the x y and z axis. okay figure एटा लिखा ही so x y z axis तो ये एंगल क्रिएट करछि सपोज अल्फा बीटा और गामा. देन आमे जानि छु यूनिट वेक्टर अलोंग x y z axis होछि i कैप j कैप k कैप. सपोज आमे कहिला एठी एज पर द फिगर op इक्वल टू तो a नै छु. अच्छा जोटा अलोंग x axis आसुछि धरो on एटा को निगला ax. देन ot नेगला ए वाई ओ एस नेगला आमे ए जेड. ये जो एन टी आउ एस केमती पाइला आमे मन रख ए पॉइंट पी टा आमे धरो कहिला एटा को भी प्लेन रे नाही ये एक्स वाई प्लेन रे अछि ना वाई जेड प्लेन रे अछि ना जेड एक्स प्लेन रे अछि मझी रे सपोज अछि रैंडम गुटे पोजीशन आमे पॉइंट पी रो कोन करिबा परपेंडिकुलर ड्रॉ करिबा. सपोज फर्स्ट आमे draw kala perpendicular on the y axis. okay we get a point here t. okay tapare point p ru next perpendicular draw kariba on the zx plane. we get another point here m. okay ei point m ru next perpendicular ebe asibo x adku au yade z axis adku. okay so आमे accordingly n t आउ s तीनटा पॉइंट पाइगला which are the perpendicular distances okay along x y and z axis. okay याको ही कहिबा हमें जो rectangular components. okay ताले एबे om plus mp equal to op हबो और om plus ot equal to op हबो because mp रो वैल्यू जहां ot रो वैल्यू मध्य ता हबो because it is a rectangle, right? Similarly, OS plus SM equal to OM or OS plus ON equal to OM. SM ro value jaha this one it is equal to ON again due to a rectangular shape. ताले आमे एबे पाइला OP equal to OS plus ON plus OT and replacing the values we get vector A equal to AX AY AZ और ax को हमें लिखी परिबा ax I ay equal to ay j az equal to az k. ताले एबे equation हमर बनि गला in terms of rectangular components the vector will be like this ax I plus ay j plus az k. एठी अगेन टिके प्रिंटिंग मिस्टेक अछि ए जगह रे एरो मार्क रहिबो नाही. ओके आई विल एडिट इट. सो याको हमें कहिबा rectangular components of the vectors along the Cartesian coordinate system. ताले এই ভেক্টর ম্যাগনিটিউড को भी हमें पाई परिबा which is obtained by square root of ax square plus ay square plus az square, right? अच्छा now किछिरा क्वांटिटी हमें जो एंगल देखितिला तयारी होतिला अल्फा बीटा गामा along the x y और z axis सहित जो एंगल क्रिएट करथिला so cos alpha is ax by a let it be small l, cos beta equal ay by a let it be small m, cos gamma हेगला az by a which is suppose small n. These are known as the direction cosines of the vector a. okay so cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma will give you nothing but a ऊपर numerator सब ऐड हेगले a square है so a square by a square which is equal to 1. so l square plus m square plus n square equal to 1. okay moving ahead एबे देखिबा पोजीशन वेक्टर कोने कोन
किसी नहीं, it is a vector joining any random point p in space to the origin of the coordinate system. Okay, origin सहित आम जोग करदेला, we will get the position vector OP which is represented by vector r. So r को आम लिखि परिबा xi plus yj plus zk and its magnitude is square root of x square plus y square plus z square. Okay, so product केमती हेबो दुईटा वेक्टर एबे टिके देखि देबा. प्रोडक्ट माने आमे बुझिबा दुई प्रकार प्रोडक्ट अछि जोटा कि अपकमिंग क्लास रे आमे पढिबा. गोटे हला स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, आ गोटे हला वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट. ओके, थैंक यू.